बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की करते हैं, क्योंकि लद्दाख के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और लद्दाख मुज़ाकरात में उसूली इत्तिफ़ाक़ तय पाए गए। इसकी तस्दीक सोनम वांगचुक की जानिब से की गई है। साथ ही साथ खुसूसी कानून साज इदारे पर वसी इत्तिफ़ाक़ या राय कायम हुआ है और आर्टिकल 371 के तर्ज के आइनी तहफ़्फ़ुज़ात की तजवीज़ जो है उस पर तबादला ख्याल हुआ है और कहीं ना कहीं बाहमी इत्तिफ़ाक़ हुआ है मरकज़ और लद्दाख की क़यादत के दरमियान, और मुस्तक़बिल में मुकम्मल रियासती दर्जा देने का अंदिया भी दिया है। इसकी भी तस्दीक सोनम वांगचुक की जानिब से की गई है। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में दावा किया कि वज़ारत दाखिला अपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई और एक उसूली इत्तिफ़ाक़ तय पा गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए खुसूसी कानून साज इदारा कायम करने पर वसी इत्तिफ़ाक़ की राय सामने आया है, जिससे इंतज़ामी, माली और कानून साजी के इख्तियारात हासिल होंगे। सोनम वांगचुक के मुताबिक मुजवज़ा निज़ाम के तहत मुंतखब नुमाइंदे या मुंतखब नुमाइंदा इदारों को ब्यूरोक्रेसी और चीफ सेक्रेटरी पर मजबूरी इख्तियारात हासिल होगा, जबकि आर्टिकल 371 तर्ज के आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के ज़रिए लद्दाख की ज़मीन, रोज़गार और सकाफ़ती शनाख्त को महफूज बनाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्तक़बिल में जब लद्दाख अपनी माली ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हो जाएगा तो लद्दाख को मुकम्मल रियासती दर्जा भी दिया जा सकता है। ये सोनम वांगचुक की जानिब से कहा गया है। जब लद्दाख की क़यादत ने वज़ारत दाखिला से मुलाकात की तो उस लद्दाखी वफद को सोनम वांगचुक लीड कर रहे थे, क़यादत कर रहे थे, और अब उनकी जानिब से कहा गया है कि आर्टिकल 371 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ात लद्दाख को दिए जाएंगे। So this was another round of talks with the Ministry of Home Affairs of Ladakh leaders, particularly Kargil Democratic Alliance from Kargil and Leh Apex Body. It was at the subcommittee level, which is the smaller size of meeting, to work out details. This happened after about 5 months. The last one was in February, early February. There were some new pathways made, new progress made, in that, as you all would know, Ladakh has been seeking safeguards under 6th schedule of the Indian Constitution and statehood for restoring democracy. Now, for safeguards, the government had been proposing Article 371 as a measure of safeguard instead of 6th schedule, although that was their pledge in various elections. But to be flexible and to come to a win-win, Ladakhi side had agreed to considering 371 as has been used for the safeguard of states like Nagaland, Mizoram, Sikkim. That was also okay, but the problem was that so far no assembly or law-making body was offered at the union territory level. The government was willing to give 371 with councils, empowering district level councils in Ladakh, which was not acceptable at all to the Ladakhi people. So the tussle was Ladakhi side saying, if you want to give that, then it should have an assembly, whether as a state, full state, or a UT with assembly. Without that, we cannot consider 371. Now, for full statehood or UT with assembly, government's side was that Ladakh does not have the revenues, its own income, to pay for the expenses, the operational expenses like salaries and pensions at this point. And since it doesn't support such operational costs for any state, therefore it will not be possible for the government to have 100% of the budget from the center. A state has to have its own resources. And therefore, finally, what was worked out was to have a UT level assembly or law-making body where elected representatives from whole of Ladakh will make laws for the protection and development of the region using Article 371 as a measure of safeguards for the environment, culture, land, and nature. And therefore this came closer to what